Student, I am again here with lecture number 5. The topic is Establishment of Muslim League 1906. 1906 was very important for Muslim because in 1906 a Muslim delegation went to Shimla and presented the demands to the Viceroy, which were later approved by British government in the form of reforms 1909. And again, 1906 was important for Muslims because in 1906 the Muslims of India, they established their own political party. Its first name was All India Muslim Confederacy, which later on became All India Muslim League. Students, हमारा लेक्चर नंबर 5 मुस्लिम लीग का क़याम, इसके अग़राज़ व मक़ासिद। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में हुआ। 1906 मुसलमानों के लिए बहुत अहम साल था, क्योंकि इसी साल मुसलमानों का एक वफ़द शिमला के मकाम पर लॉर्ड मिंटो से मिला। उस वक्त उनकी अपनी कोई जमात नहीं थी जो उनके मुतालबात हुकूमत तक पहुँचा सकती। तो मुसलमानों का एक वफ़द जो 35 अफराद पर मुश्तमिल था, सर आगा खान की क़यादत में शिमला के मकाम पर लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के मुतालबात उनके सामने पेश किए, जो बाद में 1909 के इस्लाहात की शक्ल में कुछ मुतालबात मुसलमानों के तस्लीम कर लिए गए। इसलिए 1906 मुसलमानों के लिए बहुत अहम साल था। और इसी साल दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम भी अमल में आया। ये जमात ढाका के मकाम पर नवाब सलीमुल्लाह खान, जिन्होंने इस जमात के क़याम के लिए करारदाद पेश की और शुरा ने उनकी इस करारदाद को मंजूर किया, और उन्होंने ही ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेसी का नाम इस जमात के लिए तजवीज़ किया, और मुस्लिम शुरा ने उनकी इस करारदाद को मंजूर किया, और इस तरह से मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया ढाका के मकाम पर 1906 में। In 1906, an educational conference was held at the residence of Nawab Salimullah Khan. All the Muslim leaders from different parts of India, they came to Dhaka to attend this conference, which was held to discuss the educational problem of Muslims. When the conference ended, the participants, they expressed their desire that another conference should be called in which they could discuss the establishment of a political party for Muslims. So later on, in the month of December 1906, Nawab Salimullah Khan again called a meeting of Muslim leaders from different parts of India. And in that meeting, he presented a resolution and he suggested the name for the party. The old name of All India Muslim League, which was suggested by him, was All India Muslim Confederacy. This name was suggested by Nawab Salimullah Khan, and in this way the participant approved his resolution, and Muslim League, after the approval of this resolution, came into existence. The first session of All India Muslim League was held in Karachi, 1907. The aims and objectives of Muslim League, which came into existence in 1906, its first aim was to protect the rights of Muslim. Its second aim was to convey their demands to government. Its third aim was to create feeling of goodwill and respect for British government. And its fourth aim was to bring all the nation of India closer and together. Muslim League, जिसका क़याम 1906 में हुआ, इसका पहला मकसद मुसलमानों के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था। इसका मकसद ये भी था कि मुसलमानों की जो मुतालबात थे वो हुकूमत तक पहुँचाए जा सकें, मुसलमानों में जज्बा वफ़ादारी हुकूमत के लिए पैदा किया जाए, और मुसलमानों और दूसरी अक़वाम में इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जाए। ये भी मुस्लिम लीग का मकसद था। बाद में
کچھ ایسے واقعات ہندوستان میں پیش آئے جیسے کہ تقسیم بنگال کی منسوخی، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نے اپنے اغراض و مقاصد میں تبدیلی کی 1913 میں، اور مسلم لیگ نے اب یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں کے ساتھ جذبہ وفاداری کے بجائے اگر ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دیا جائے تو ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے اور اپنی خود مختار حکومت قائم کر سکیں گے۔ یہ مسلم لیگ کا مقصد تھا 1913 میں، اور اس نے باقاعدہ اپنے مقاصد میں تبدیلی کی، اور اس کا مقصد تھا ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینا اور انگریز حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا اور ہندوستان میں اپنی خود مختار حکومت قائم کرنا۔ Later on, due to the annulment of partition of Bengal, Muslim League in 1913 changes its course. Muslim League decided to change its line of action in the wake of government attitude and come out with a new course toward Hindu-Muslim unity. Muslim League decided that Hindu and Muslim should be united onwards to get rid of British rulers so that they could establish their self-rule in India. Students, onwards from 1913 to 1924, you'll get unity among Hindus and Muslim. It is a period of unity. Thank you.